Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life, Dr. Muhammad Yousaf. Today I am going to discuss the cardiac cycle, mechanical events of cardiac cycle. Cardiac cycle, that is known as cardiac cycle. But before that, as my routine, one ayah from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. सूरह अहज़ाब की आयत है, मशहूर आयत है सारे कि यकीनन तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना मौजूद है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है, जिसको अल्लाह पे यकीन है और क़यामत के होने पर यकीन है, ईमान यही है। उसके लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हाँ, और जो कसरत से अल्लाह को भी याद करता है, जिसका अल्लाह पर ईमान है वो अल्लाह को याद रखता है, हर अमल में अल्लाह उसको याद रहे। अल्लाह को याद करने का क्या मतलब है कि हर वक्त अल्लाह उसको याद रहे कि इस वक्त मेरे लिए अल्लाह का क्या हुक्म है। बकसरत अल्लाह को याद करना, बोलना भी है, अल्लाह का जिक्र करना भी है, लेकिन याद रखने का मतलब है कि हर अमल में अल्लाह का सामने रख कर ज़िंदगी गुजारी जाए। तो बेहतरीन नमूना जो इसके लिए, इस बात के लिए है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के सामने, अल्लाह को सामने रख कर गुजारी है। वो नमूना है हमारे लिए। अल्लाह पाक हमें समझ, हुज़ूर की ज़िंदगी से मेल खाती हुई ज़िंदगी जो है ये कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द कार्डियक साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस circulatory physiology, CVS physiology, cardiac cycle. What is that definition? How we define it? The events taking place in the heart. That is all the events taking place in the heart from one systole to next systole, or one diastole to next diastole. They are this whole, all events, they are included in this cardiac cycle. Cyclic rhythm, there is rhythm. This cardiac cycle comprises of first electrical events. There is process of production of impulse, spread of impulse, and then depolarization of the atria, then depolarization of the ventricle through the AV nodal or the bundle of his, etc., etc., what we term as electrical events. And which we are going to discuss today, that is mechanical events, pumping activity. This cardiac cycle we are going to discuss mechanical events. So these two are the important part of the electrical events in cardiac cycle and mechanical events. So today we will discuss the mechanical events in cardiac cycle. Electrical events we will discuss when we discuss the in detail the electrocardiogram, etc., ECG जब discuss करेंगे. Electrical events, then we can just list them. That is the generation of cardiac impulse in SA node, then the depolarization of the atria, then the AV nodal delay. This phenomena we will discuss inshallah ta'ala. And the depolarization of the ventricle, then the repolarization, the process, all that. And the electrical events precede the mechanical event. This much you know. That is even in skeletal muscle or in smooth muscle, depolarization takes place, then the mechanical event contraction will take place. So electrical events, they precede the mechanical events. We are going to discuss the mechanical event. So depolarization causes contraction and repolarization causes relaxation. This much you already know. So this is that ECG we will discuss in detail when we discuss so these are the waves, P wave, then there is a segment, then there is QRS complex system of three waves, Q wave, R wave, S wave, then there is a segment, then there is T wave. So all this is the P wave is the atrial depolarization. We will discuss it in ECG. And the QRS complex shows us the ventricular depolarization and the T wave is the ventricular repolarization, and the atrial repolarization is here merged with this QRS complex during this. So these electrical events we will discuss when we discuss ECG in detail.
Today's topic is the mechanical events, cardiac cycle के mechanical events, which comprises of these two mechanical events, systole and diastole. Systole is the contraction of the cardiac muscle, and diastole is the relaxation of the cardiac muscle. You already know it. We are going to discuss the events in systole. There are several events in systole. There are several phases in the systole as well as in diastole. So atrial systole precedes the ventricular systole. This important aspect पहले भी शायद हमने जिक्र किया था. That is, atrial systole, first atria contract as one syncytium, and after that ventriculars. So atrial systole precedes, that is before the ventricular systole, because of AV nodal delay. ये पिछली slide में the bundle of his the AV node पे there is delay phenomena, उसको हम discuss करेंगे ECG में. So AV nodal delay. So atria contract as primer pump. And the actual pump, the pumping force is generated by the ventricular contraction. So the ventricular systole provide the actual pumping force. And today the phases of the cardiac cycle which we are going to discuss, those are the phases of the ventricular phenomena. Ventricular contraction and relaxation. Actual pumping force is generated by ventricle. ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टली या डायस्टली, हम वेंट्रिकुलर सिस्टली डायस्टली की बात करेंगे. एट्रियल सिस्टली का रोल प्राइमर पंप के तौर पर वी विल मेंशन इट, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो मेंशन करेंगे. बट ऑल द फेजेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दोज आर दी वेंट्रिकुलर सिस्टली एंड डायस्टली की फेजेस हम डिस्कस करेंगे. Now ventricular systole, ये cardiac cycle हम discuss करेंगे, important. At normal heart rate 72 beats per minute, ventricular contraction relaxation 72 beats per minute हर cycle जो है. Duration of each cardiac cycle we can calculate it by this, that is 60 सेकंड में 72 है, तो 60 divided by 72 will give us the duration of one cycle, one cardiac cycle. It comes to be 0.83 seconds. Out of this 0.83 seconds, systole is shorter. It is only 0.33 seconds. That is about 40% or 0.4 out of 1. That is 40% of the total duration. And diastole is longer, that is 0.5, about 60% of the total duration, or 0.6 out of 1. So this is longer, this is important. Diastole is longer than the systole. Systole is only 0.3 and diastole is 0.5. इसको आगे हम mention करेंगे importance. When there is tachycardia, when heart rate increases, it is not 72, it is 100 say. When tachycardia occurs, heart rate increases. What does that mean? That means duration of cardiac cycle has shortened. जल्दी जल्दी काम हो रहा है. तो duration has shortened is not 0.83. It will be much less than 0.83. It may be, if it is 100, then you can divide it by, that is the 100 beats per minute, 60 divided by 100. 60 divided by 100, it will be 0.6 only, if the heart rate is 60. So when there is tachycardia, total duration of cardiac cycle is reduced. Instead of 0.83, it will be 0.7, 0.6, or even less than that. So the total duration is reduced. Both systolic and diastolic period are reduced. ये पहले मैं बोल रहा हूँ, commit कर रहा हूँ. Both systolic and diastolic period are reduced, but what is but? Diastolic period is more reduced. That is, tachycardia occurs at the expense of diastolic duration, diastolic period. Shortening of the both diastolic and systolic period will occur, but diastolic period will be more shortened. And word of caution, what is that? Diastole is when the heart is being filled. Relaxation of the ventricle, filling of the ventricle is taking place. If this duration is too short, then the proper filling may not take place. So, but diastolic time is more decreased, and if tachycardia is very high cardiac heart rate, then the filling may be reduced. This is important. Heart rate ka बढ़ना unlimitedly, it will not increase the cardiac output to certain physiological limits.
very high cardiac heart rate may reduce the filling of the heart because of more reduction in this diastolic period. 0.5 से थोड़ा कम हो, अगर ज़्यादा कम हो जाए तो then the filling proper नहीं हो सकेगी. We will discuss, इसको आगे भी हम इसको elaborate करेंगे इंशाल्लाह. So we are going to discuss the cardiac cycle with reference to ventricular cycle only, ventricular systole and diastole. So phases of this cardiac cycle, body phases तो वही हैं, systole and diastole, but systole is further divided into in the ventricular systole, which is emptying of the ventricle. When ventricle is contracting, contraction of the ventricle is emptying the ventricle, pushing of the blood into the aorta, into the pulmonary trunk. So it comprises of number one, isovolumetric contraction phase. We will describe it. First phase is isovolumic or isovolumetric, both are correct. Isovolumic contraction phase. Then there is rapid ejection phase. Initially there is no change in the volume, उसको आगे explain करेंगे अगली slide पे इंशाल्लाह ताला. Then there is rapid ejection phase. पहले contraction हो रही है, both valves are closed, there is no change in volume, isovolume. Then that aortic valve will open or the pulmonary valve will open in right side and the blood will be pushed. Rapid ejection phase will occur. And then there is slow ejection. पहले blood collect हुआ था, वो rapidly eject हुआ, then slow ejection continues during systole is quite long. हमने पहले भी discuss किया, systole of the ventricle it may take 0.25 seconds, 0.2 seconds. So the slow ejection phase. So these are the three important phases of systolic period. And then diastole. During diastole, filling of the ventricle takes place. पिछली slide में भी हम बात कर रहे थे. 0.5 second इसका time लगता है normally. That is filling of the ventricle takes place. इसकी कौन सी phases है? First is isovolumic relaxation phase. That was contraction, now relaxation is taking place. Valves are closed and relaxation is taking place. There is no change in volume. इसको आगे explain करेंगे. So isovolumic relaxation phase. Then valve will open, कौन सा AV valve will open? Rapid filling from the atria. Atria में blood collect हो चुका था, AV valve will open and the rapid filling of the ventricle will take place. Rapid filling phase. Then slow filling phase. Blood will be flowing from the veins into the atria, into the ventricle. It is a continuous process. So slow filling phase. Now final filling will occur because of the atrial contraction. ये contribution of the atria in filling. ये filling तो खुद हो रही है. This rapid filling and slow filling, isovolumetric relaxation हो रही है, valve दोनों बंद हैं, लेकिन जब pressure इतना कम हो जाएगा तो AV valve open, rapid filling will occur, then filling will continue, that will be slow filling. Slow filling means pulmonary arteries vein से blood आ रहा है, left side की बात कर रहे हैं, pulmonary vein से blood आ रहा है, it is directly coming from atria and valve खुला है, ventricle में आ रहा है, this is slow filling phase. अब final filling will be because of the atrial contraction. अब इस वक्त तक एट्रिया में depolarization हो चुकी होगी, they will contract and they will atria will push the final amount of blood. 20% filling of the ventricle will take place because of this atrial contraction. So this is the filling. This is the उसका हिस्सा तो नहीं है but filling का हिस्सा जरूर है. Atrial contraction तो उसका contraction का period नहीं है but filling of the final filling of the ventricle is atria contribute 20% of the filling. So that's how this. Now we are going to explain all these phases. These 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 important phases we are going to talk about. So atria are the primer pump. Actual pumping force is generated by the ventricle. Atria सिर्फ final filling के लिए ज़रूरत है. 80% of the filling occurs without atria. That is वो rapid filling and slow filling phase में direct filling हो जाती है. Direct flow of the blood from the veins into the atria and then into the ventricle. But the atrial contraction contributes 20%. ये पिछली slide में भी देख के आ गए हैं. No important, this is may not be very important during normal cardiac cycle, normal activity. It may not be important. Atria ना भी हो तो काम चल जाएगा. अगर उनकी pumping activity ना भी हो तो काम चल जाएगा. So it is not important under normal condition, but
This becomes very important during sternal exercise when we do need extra amount of the blood, extra amount of filling. When the more cardiac output is required, this atrial pumping becomes very important. Now this apparently somewhat complicated diagram, but it is very easy and beautiful diagram explaining all the events of the cardiac cycle. This upper three curves, this is one curve, red one is the second curve, and then this is dotted one is the third curve. These are the pressure changes. What pressure changes? This red curve is pressure changes in the ventricle, and this dotted line up the topmost one, this one is the pressure changes in aorta, and this dotted line is the ACV जिस पर लिखा हुआ है. This is the atrial pressure changes. इन तीनों को हम explain करेंगे. So these are the pressure changes. किस जगह पे? Ventricular pressure changes, this curve, red curve जो show कर रही है. Atrial pressure changes, ये आखिरी ये नीचे वाली curve. और aorta की pressure changes ये ऊपर ये तीन curve pressure changes show कर रही है. ये blue जो है, this is the volume, ventricular volume को show कर रही है. किस वक्त कितना volume है, किस सिस्टली में, किस फेज में वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कितना है, उसको हम बात करेंगे. देन दिस इज ईसीजी, पहले भी हम बात कर रहे हैं. ये सबसे नीचे हार्ट साउंड है जिसको अभी तक हमने जिक्र नहीं किया. तो हार्ट साउंड भी पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल है. 4 साउंड पैदा होती हैं, 2 हम सुन सकते हैं. तो हार्ट साउंड की भी रिकॉर्डिंग, फोनोकार्डियोग्राम इसको कहते हैं. दिस इज फोनोकार्डियोग्राम, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इज वेंट्रिकुलर वॉल्यूम चेंजेस, और 3 अपर कर्व जो हैं ये प्रेशर चेंजेस इन दीज 3 एरियाज. उसको हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे. नाउ मैकेनिकल इवेंट्स हम बात कर रहे हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसको हम डिस्कस करेंगे. टॉप मोस्ट एज आई सेड इज द एआर्टिक प्रेशर. This green one is the ventricular volume, and this blue one is the atrial ventricular volume, नहीं ventricular pressure. And this blue one is the atrial pressure waves. हम वेव नजर आ रहे हैं. ये एक वेव है, ये वेव है, ये बड़ी सी वेव है. एआर्टिक प्रेशर की ये वेव है, ये छोटी सी वेव, और फिर ऐसे एआर्टिक प्रेशर है. तो इसको हम डिस्कस करेंगे. So this is the pressure changes. ये कौन से pressure changes? That is the volume changes. ये ventricular volume changes हमने अभी डिस्कस किया. और ये तो नीचे ECG है, और फिर नीचे हार्ट साउंड है. इसको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं. हार्ट साउंड. Now the systole of the ventricle, उसकी phases हमने देखेंगे. Emptying of the ventricle, first phase is the isovolumetric contraction phase. उसकी duration time उसका कितना है? It takes only 0.02 to 0.03 seconds. ये कब होगा? आइसोवॉल्यूमिक मीन्स हम कार्डियक साइकिल शुरू कर रहे हैं, सिस्टली शुरू हो रही है. सिस्टली कब शुरू होगी? जब वेंट्रिकुलर फिलिंग हो चुकी होती है. जब ये कंट्रैक्शन शुरू होती है, यू कैन इमेजिन. कंट्रैक्शन कब शुरू होगी? फिलिंग हो रही है. एआर्टिक वेल, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को हम सामने रख के मैं डिस्कस कर रहा हूँ. राइट वेंट्रिकल को भी सेम इज एप्लीकेबल टू राइट वेंट्रिकल. प्रेशर चेंजेस तो वो फर्क है, लेकिन होता ऐसे ही है. लेफ्ट वेंट्रिकल इज बीइंग फिल हो रहा है. क्या मतलब है? एआर्टिक वेल, लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड इनटू द एआर्टा. एआर्टिक वेल बंद पड़ा हुआ है. ड्यूरिंग फिलिंग एआर्टिक वेल बंद पड़ा हुआ है. अब फिलिंग हो रही है, इसमें रैपिड फिलिंग फेज, उसको हम देखेंगे. फिलिंग हो रही है. व्हेन कंट्रैक्शन स्टार्ट्स, यहाँ प्रेशर अचानक तेजी से बढ़ेगा तो क्या होगा? पहले तो प्रेशर बराबर था एट्रिया वेंट्रिकल का. जो ही इसका प्रेशर, कंट्रैक्शन विल इंक्रीज द प्रेशर, दिस विल क्लोज द वेल. कौन सा? माइट्रल वेल, एवी वेल. लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल दरमियान जो वेल्व है, एवी वेल, जो उसके माइट्रल वेल 2 कस वाला. जब जो ही यहाँ प्रेशर बनेगा, ये ऊपर ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा. दिस फ्लैप विल क्लोज, बोथ फ्लैप विल क्लोज. नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द एट्रियल सिस्टली, एआर्टिक वेल्व इज ऑलरेडी क्लोज्ड. बिगिनिंग पे ये AV valve will close. Now this is a closed chamber. Aortic valve is already closed, and AV valve has closed just at the beginning of the systole. So now the contraction is taking place. Only pressure is increasing.
प्रेशर इज इंक्रीजिंग, कब तक ये प्रेशर बढ़ता रहेगा? जब तक यहाँ का प्रेशर एआर्टा के प्रेशर से ज्यादा नहीं होगा। एआर्टिक वेल्व को ओपन करना है ना, कंट्रैक्शन विल कॉज द पुशिंग ऑफ द ब्लड इनटू द एआर्टा। लेकिन ब्लड कब जाएगा? जब प्रेशर इन द वेंट्रिकल इज मोर देन द एआर्टिक प्रेशर। और एआर्टिक प्रेशर तो आपको पता है डायस्टोली के दौरान कितना कम होता है, 80 मिलीमीटर तक जाता है, और यहाँ पे तो 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर था। अब ये कंट्रैक्शन हो रही है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, यानी क्लोज चैम्बर में प्रेशर इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज प्रेशर, यहां से देखें ना, यहां से ये शूट है प्रेशर का, ये ग्रीन कर्व जो ऊपर जा रही है। प्रेशर इज इंक्रीजिंग जब तक कि एआर्टिक वेल्व ओपन ना हो जाए। कब ओपन करेगा? when this pressure reaches 80 millimeter of mercury, above 80 millimeter of mercury, above aortic pressure, तब वो वेल्व खुलेगा। so this is isovolumetric contraction phase। यहां से लेकर यहां तक जो कंट्रैक्शन है, this is isovolumetric contraction phase। ये आप इसको इस जगह को देखें, this to this, that is this red line is going, only pressure is increasing, there is no increase in volume। ये वॉल्यूम वाली कर्व है, पहले हमने एक्सप्लेन की है, ये ब्लैक कर्व, there is no increase in volume, isovolumetric contract, so there is no increase in volume। ये वॉल्यूम कर्व ये उसी जगह पे खड़ा है, स्ट्रेट लाइन है। इस दौरान ये छोटा सा पीरियड जो है 0.02 सेकंड का जो पीरियड है, तो isovolumetric contraction phase is taking place, so there is only pressure is increasing till this pressure inside the, ये कौन सा प्रेशर है? दिस इज वेंट्रिकुलर प्रेशर। ये जो रेड है दिस इज एआर्टिक प्रेशर। जब ये वाला प्रेशर एआर्टिक प्रेशर से ऊपर जाएगा, एआर्टिक वेल्व विल ओपन। नाउ वेंट्रिकल का प्रेशर जो ही एआर्टा से ज्यादा होगा, एआर्टिक वेल्व विल ओपन। नाउ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज एंड्स, यहां पे एंड होगी। अब क्या शुरू होगा? रैपिड इजेक्शन फेज। जो ब्लड इधर इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ था, जब वेल्व ओपन करेगा द ब्लड विल रश आउट। सो दिस इज रैपिड इजेक्शन फेज विल स्टार्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द एआर्टिक वेल्व। हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, दूसरे राइट पे बात करेंगे पल्मोनरी वेव। सेम इज एप्लीकेबल टू राइट साइड। प्रेशर का फर्क होगा, वहां पे प्रेशर कम होता है, वहां पे अदरवाइज फेजेज यही होती हैं। तो रैपिड इजेक्शन फेज विल स्टार्ट, इट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, 0.1 to 0.11, 0.1 सेकेंड, इससे आता है ना। ये दिस इज वेरी शॉर्ट, इससे तो लंबा है, इससे 5 टाइम मोर। तो दिस इज इंक्रीजिंग, सो दिस पार्ट, दिस ये when rapidly blood collected in the ventricle is ejected out, this reduced volume, ये ventricular volume को शो कर रहा है, reduced, rapidly reduced volume in the ventricle, ये कहाँ जा रहा है? The blood is being pushed into the aorta, so this is rapid ejection phase after the opening of the aorta। अब जब वो ब्लड इतना प्रेशर वाला बाहर पुश हो गया, then there is ये ऊपर बोला देखें, this one, this is यहाँ से यहाँ तक ये देखें, this phase is the rapid ejection phase। अब इसके बाद इज दी स्लो इजेक्शन फेज। इसके बाद थोड़ा सा ब्लड जो ये वाला इजेक्ट होना है, वॉल्यूम कम होना है, दिस इज स्लो इजेक्शन फेज। इट लास्ट फॉर 0.14 सेकेंड्स। ये 30% ऑफ द ब्लड, 70% ऑफ द ब्लड, तो 70% ऑफ द ब्लड इज पुश्ड आउट इन रैपिड इजेक्शन फेज। बाकी 30% ऑफ द ब्लड इज पुश्ड इनटू द एआर्टा, दैट इज इन 0.14 सेकेंड्स। उसको स्लो इजेक्शन फेज कहते हैं। दिस वन स्लो इजेक्शन फेज, ब्लड पुश हो रहा है। उसके बाद फिर जब इतना ब्लड पुश हो रहा है, स्लो इजेक्शन फेज इज टेकिंग प्लेस, दिस वन, यहां से यहां तक, कहां तक कि व्हेन द प्रेशर इनसाइड द स्लो इजेक्शन फेज कब तक रहेगा? इट इज बीइंग इजेक्टेड। अब क्या शुरू होगा? सिस्टली हैज कंप्लीटेड, सिस्टली मुकम्मल हो गई है, अब रिलैक्सेशन शुरू होगी, डायस्टली स्टार्ट मिलेगी, कार्डिक साइकिल की डायस्टली स्टार्ट होगी, दैट इज फिलिंग विल स्टार्ट। यहां तक फिलिंग विल स्टार्ट, यहां पे डायस्टली ऑफ द वेंट्रिकल विल स्टार्ट, कंट्रैक्शन मुकम्मल हो गई है, सिस्टली हैज कंप्लीटेड। सिस्टली के वही 3 फेजेज हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज, रैपिड इजेक्शन फेज एंड स्लो इजेक्शन फेज। अब डायस्टली शुरू होगी, और डायस्टली कब शुरू हुई है? डायस्टली शुरू होते ही प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल विल फॉल,
प्रेशर तो अभी एआर्टा और पल्मोनरी वेंट्रिकल और एआर्टा का प्रेशर बराबर था, ब्लड वाज गोइंग फ्रॉम, वेंट्रिकल वाला ज़्यादा था, ब्लड वाज गोइंग फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एआर्टा। लेकिन जो ही यहाँ रिलैक्सेशन शुरू होगी, प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल विल फॉल बिलो एआर्टिक प्रेशर। तो बिलो एआर्टिक प्रेशर जब होगा, ब्लड विल ट्राई टू कम बैक इनटू द वेंट्रिकल, बट दिस क्लोजेज द एआर्टिक वेल। दिस हियर aortic valve will close when the pressure in the ventricle is below the aortic pressure, the aortic valve will close. अब ये पहला valve तो ऊपर वाला पहला AV valve is already closed. Now aortic valve is closed, but the relaxation is taking place. Now ये उल्टा काम हो रहा है. So this phase is known as isovolumetric relaxation phase. रिलैक्सेशन फेज है, ये भी 0.1 सेकेंड की है. इसमें क्या हो रहा है? ओनली प्रेशर इज फॉलिंग. Both valves, AV valve and aortic valve, both are closed. Relaxation is causing fall in the pressure, rapid fall in the pressure. ये वाला, ये ग्रीन कर्व इतनी तेजी से आ रही है, टाइम इसमें बहुत थोड़ा लगा है. नो चेंज इन द वॉल्यूम. ये वॉल्यूम को कर्व को देखे, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, बट प्रेशर इज रैपिडली फॉलिंग. उतने जीरो तक आ रहा है, इतना फॉल करे कि एटीएल प्रेशर से भी कम हो जाए. एटीएल प्रेशर तो आपको पता है 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है लेफ्ट साइड का, 2 मिली, उससे भी कम होगा तो इट विल द एटीएल वाल्व विल ओपन, एवी वाल्व विल ओपन. तो द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, ये ऊपर ये मैंने ब्लू एरो यहाँ लिखा हो, ये ब्लू एरो ऊपर, ये ब्लू एरो, दिस फेज दोबारा मैं दिखाता हूँ. वो ब्लू एरो हेयर एंड दिस फेज, दिस इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक relaxation phase, that is only pressure is falling. ये बंद पे, there is no volume change नहीं हो रही इस दौरान. ये जो ब्लू थोड़ा सा दिखा है, no change in the volume. And after that ये rapid filling phase. कब? Rapid filling phase कब होगी? When this pressure is below the pressure in the atrial, below the atrial pressure. atrial pressure से जो ही कम होगा, AV valve will open, mitral valve will open. AV valve हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, that is mitral valve will open. So जो ब्लड ऊपर कलेक्ट हुआ था, that will rush out. That is rapid filling phase. 0.1 सेकेंड, ये 0.1 सेकेंड में काम हो जाता है. 60 to 70% फिलिंग इससे हो जाती है. एंड उसके बाद देन स्लो फिलिंग फेज, दिस इज रैपिड इजेक्शन फेज. ये जो वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है, दिस इज दी रैपिड फिलिंग फेज. ये वॉल्यूम यहाँ था, तेजी से ऊपर गया है. ये 60 to 70% ऑफ द ब्लड कलेक्टेड इन द एट्रिया रशेस इनटू द वेंट्रिकल. दिस इज 60 to 70% फिलिंग. नाउ देन स्लो फिलिंग फेज, दैट इज 0.2 सेकेंड. वो 0.2 से स्लो फिलिंग फेज. इसके बाद ये रैपिड, ये स्लोली फिल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ऊपर जा रहा है. उसके बाद क्या हो रहा है? ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम द pulmonary vein into the atria into the ventricle. ये सारे एक चैम्बर बन गया है, वेल्व खुला हुआ है. पल्मोनरी वेल से ब्लड एट्रिया में आ रहा है, आगे वेल्व भी खुला है, डायरेक्टली वेंट्रिकल में जा रहा है. सो दिस इज स्लो फिलिंग फेज. 10 to 20% फिलिंग इससे होती है. और आखिरी फिलिंग तो हमने पहले भी बात की है, एट्रियल कंट्रैक्शन. दिस इज वो ये स्लो फिलिंग फेज यहाँ पे आ गया. देन दी आखिरी फिलिंग 20%, आखिरी फिलिंग इज एट्रियल सिस्टली. ये जो आखिरी वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द एट्रियल सिस्टली. यहाँ पे ब्लू लाइन में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. एट्रियल सिस्टली इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, एट्रियल, दिस विल कंप्लीट द कार्डियक साइकिल. प्रॉपर फिलिंग हैज टेक प्लेस. फिलिंग हो गई है, अब ये साइकिल विल बी रिपीटेड बैक टू आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज. फिर शुरू हो जाएगी, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल विल स्टार्ट थ्रू आइसो. सो दिस साइकिल इज रिपीटेड अगेन अगेन. ये हमने शो कर दिया एट्रियल कंट्रैक्शन से. ये जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इन द वॉल्यूम एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्दर फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल इज टेकिंग प्लेस. तो दीज आर द फेजेस ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग. हम इसको और एलेबोरेट करेंगे. रेस्ट ऑफ द ये जो हमने कर्व्स हमने देखी हुई हैं, ये प्रेशर, ये वाली प्रेशर कर्व और एआर्टिक प्रेशर कर्व को, वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व इज मोर इम्पॉर्टेंट. इसको हमने डिस्कस कर लिया है. इन कर्व्स को, वॉल्यूम की भी हमने इसके साथ साथ डिस्कस कर लिया है. ये एट्रियल प्रेशर चेंजेस, इसकी एसीवी वेव, हम इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. और एआर्टिक प्रेशर की हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में
डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट हम वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो दैट इज द कार्डिक साइकिल को हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू. मेन फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट द एआर्टिक प्रेशर कर्व एंड सम मोर इम्पॉर्टेंट कुछ और वॉल्यूम में नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. होप यू आर फॉलोइंग मी. इफ़ यू हैव गॉट सम क्वेरी सम क्वेश्चंस yet you can ask me in my comment section. and फिर मैं आपको आखिर में कह देता हूँ कि मेरे इसको सब्सक्राइब भी करें और लोगों को दावत दें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको शेयर करें लोगों के साथ कि जिनको कुछ फ़ायदा हो सकता है हमसे. तो आपका भी इंशाल्लाह इसमें सदका जारिया होगा, हमारा भी सदका जारिया होगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.